प्यारे विद्यार्थियों, ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਐਜ਼ ए ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਣਾ। पहला क्वेश्चन, इफ 0 to infinity e the power minus ax dx equals to 1 over a, then use this integral to evaluate integral 0 to infinity x the power m e the power minus ax dx where a is greater than 0. So solution, we are given integral 0 to infinity e the power minus ax dx equals to 1 over a. Now differentiate with respect to a on both sides. ध्यान नाल देखो, differentiate करना with respect to a. So curly by curly a of e the power minus ax dx equals to the derivative करना with respect to a minus 1 over a square. इसका derivative with respect to a करना, so e the power minus ax का e the power minus ax हो गया into minus ax का with respect to a करना हो जाएगा minus x dx. So minus minus cancel हो जाएगा, this is 1 over a square, तो 1 over a square मतलब 1 over 1 plus 1. Again differentiate with respect to a. दोबारा डिफरेंशिएट करांगे with respect to a. So what we get? What we get? इस सेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए. माइनस 2 अपॉन ए क्यूब, इधर डेरिवेटिव आएगा माइनस 2 अपॉन ए क्यूब. तो फिर माइनस एक्स लिख लो 2 प्लस 1. टू फैक्टोरियल अपॉन and so on. 2 factorial upon a the power 2 plus 1 and so on. So it imply m factorial. यही बेटा आप प्रूव करना सीगा. So this proves the first example. Second example, from value of integral find value of where m is greater than or equal to 0. Solution. Now solve करेंगे, it will be 1 over m plus 1. Now differentiate with respect to m. So x की पावर m का डेरिवेटिव x की पावर m into log x, क्योंकि a की पावर with respect to m आप कर रहे हैं. Again differentiate with respect to m. स्क्वायर हो जाएगा into minus 1 the square 2 factorial and so on. So it implies
-1 the power n factorial over m plus 1 raised to power n plus 1. Thank you.